इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम स्टूडेंट्स। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि आई एम रोहतक के स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस देयर जर्नी विथ यू ऑल। एंड टुडे वी हैव वन सच किड, अर्श गुप्ता। अ वेरी वार्म वेलकम अर्श। He was a super Thank grad you. student. He joined us, and right now, finally, आप देख सकते हैं इस विंडो के थ्रू he is wearing the jersey of I am Rohtak in front of you all. वो I am Rohtak के हॉस्टल में बैठे हैं। Arsh, just introduce yourself first of all, and then also talk a bit about your IPM journey. So, good afternoon, guys. I'm Arsh. I am a student in Indian Institute of Management, Rohtak, and currently pursuing integrated program in management. I'm from Ranchi. I'm a PCM student, and I took a drop and prepared for IPM. Okay. So that's great. Arsh, if you can just tell help student, because usually there was a myth earlier. पहले एक myth थी कि जितने students drop लेते हैं उनका selection नहीं होता IIMs में। और एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्या ड्रॉपर की जर्नी कैसी रहेगी। सो आईपीएम जर्नी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ड्रॉपर, आप अपनी जर्नी बताइए ताकि जितने यहाँ पर ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हैं दे गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट प्रॉपर्ली। मोर और लेस एक ड्रॉपर और एक नॉन ड्रॉपर की जर्नी सेम ही होती है. अच्छा। बट व्हाट इज डिफरेंट इज दैट द इंटरनल प्रेशर जो अंदर से आता है कि मैंने एक ड्रॉप लिया है, मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. मैंने पिछले साल भी दिया था, मेरा नहीं हुआ, क्या इस बार कुछ मैं क्या अलग करूं कि क्या अलग होगा रिजल्ट, क्या सेम रिजल्ट नहीं आ जाएगा. दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच अराइज इन एवरीवन्स माइंड्स. एंड यू नो व्हाट, मेरे साथ भी वही होता था. इट वाज सेम फॉर मी. बट व्हाट व्हाट डिपेंड्स दैट कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप अपने से एड्रेस करते हो, कैसे अपने प्रिपरेशन से इन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपरेशन. ओके, Yes, a dropper can go to an IIM, and it's not that hard. ग्रेट ग्रेट अर्श। सो अर्श टोल्ड कि उसकी आईपीएम जर्नी एज अ ड्रॉपर कैसे रही। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रेटजी इज समथिंग दैट रियली रियली मैटर्स एंड फॉर ऑल दी सेक्शंस बिकॉज सबसे अच्छी बात ये रही कि अर्श ने आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर भी क्लियर किया। सो इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज लिसनिंग राइट अवे। और फाइनल में वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाया एज वी डिस्कस्ड, लेकिन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। But let me ask Arsh right now. Arsh, what was your strategy for all the three subjects? So how did you prepare? And how did this journey start? And what was going on at that point of time in your mind? The common thing which was my strategy for all the three subjects was based on basically consistency. Okay. Consistency is the thing which matters the most. I tried to be as consistent as I can in the last 6 months of my preparation, especially. I took admission to SuperGrads in December, I believe, and from December, I was involved in very rigorous preparation for all the three subjects. Okay. Basically, summing up for QA, my strategy was basically mocks. Mocks was very essential for QA for me. I followed the material. I followed IPM Astra material, and for English, I'd say I completed all the material, all the sheets, mocks. I read Hindu on a daily basis. Acha. Hindu was really important in my preparation for vocabulary, especially Okay. for for logical reasoning. And D.I. Raghavendra sir's classes were just more than enough, Okay. and the material was also just enough. I didn't do much preparation for LR, Okay. and yes, sir, that was Clearly, my he's strategy, summing sir. up over here that for English he took an external help from a newspaper called The Hindu. उसने इसकी काफी हेल्प करी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए इसने हमारे मॉक्स पे बहुत रिलाई किया। आईपीएम अस्त्र की भी बात करी यहाँ पर अर्श ने। सो विल बी टॉकिंग अबाउट आईपीएम अस्त्र आल्सो। ही इज आल्सो सेइंग दैट फॉर लॉजिकल रीजनिंग the material and everything provided by supergrads was quite sufficient. So that's great. Now let me ask you this particular question, Arsh, from this particular dice. You talked about IPM Astra, and it's said to be one of the best series available across the industry and across all the institutes. So, how was your experience with IPM Astra? Were you giving regular mocks? How were you analyzing? उस point of time पे तुम कैसे prepare कर रहे थे IPM Astra के साथ? IPM Astra I would describe as a very limited and very sufficient resource. Right. अगर उसको properly follow करा जाए, तो it can just work wonders for people. तो मैंने properly I'd say that I tried to follow at least IPM Astra. मैंने सारे questions बनाए, उसका analysis किया, most of it. मैंने doubts पूछे, तो that was really helpful for me for clearing Indore especially.
Okay, so he's saying that IPM Astra really helped him. He clearly mentioned that. इसके बाद अर्श एक और important aspect है, that's the interview part, and really that's the part जहां पर सब सारे के सारे intelligent students ही होते हैं. So you are competing with the most intelligent lot over there. So तुम्हारा interview preparation experience कैसे रहा सुपरग्रैड्स के साथ, पहले वो देखते हैं. Then we'll also be asking you what happened in IIM Indore interview, why didn't you clear that, and we'll be also talking about the Rohtak's interview later. Yes. सर, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन जो मेरा था वो बेसिकली सेल्फ एनालिसिस पे बेस्ड था. Introspection part. The introspection part is really very important in the interview part, and I'll advise all of you to uh, be involved in introspection. कि what are our strengths, what are our weaknesses, क्या fields हमारी strong है, क्या हमारी weak fields हैं, क्यों मैं ये चीज करना चाहता हूँ, क्यों मैं ये कोर्स परस्यू करना चाहता हूँ. ये सब क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए हमें. हमें इनका आंसर पहले से मालूम होना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का. बाकी इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स, हमारे स्पीकिंग स्किल्स आते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं. उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो आप मॉक इंटरव्यूज देंगे, जो सिमुलेट करता है ओरिजिनल इंटरव्यू को, वो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज दैट प्रेशर वाज रियली overbearing sometimes. But these mock interviews really helped me to cope up with that pressure. I used to stumble several times. I used to stop in the middle. But after the preparation, I was really going with the flow, and I was speaking in flow. So that If helped we me a can talk lot. more about the IPM interview generation, sorry, IPM interview journey with Supergrads, क्योंकि उस point of time पे we were the panelist और बाहर के IIM के panelist भी थे. In fact, mentors थे जो Hmm. IIM के students थे. Then our management team was there, that was helping you out in scheduling and everything, providing you the feedback, written feedback and everything at that point of time. So if you can sum up कि वो journey कैसी रही? Basically, SuperGrads provided me exposure to a lot of IIM students, and also some industry experts who really gave valuable insights about preparing for the interview, what to say in the interview, what not to say in the interview, how to present, what to do, what not to do. It was really important knowing all these important aspects of an interview. And जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, आई रिमेम्बर विथ रेनू मैम, उनके क्वेश्चंस वर रियली नाइस. अच्छा. और दैट ऑन द स्पॉट वो थिंकिंग जो स्किल डेवलप हो रही थी उसके साथ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. दे वर, आई थिंक ऑन एवरी थर्ड डे देयर आई गिव एन इंटरव्यू, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. Great, Ash. So these are the point being spoken by Ash. He was summing up his interview experience also with Supergrads. Now, how was your interview day experience in Indore? How was that different from Rohtak? तुमने क्या वहां पे गलतियां करी जो तुमने रोहतक में नहीं करी? What do you feel? Talking about I am Indore interview, I was really nervous that day. Nervousness was that part which differed in the I am Rohtak interview and I am Indore interview. From the beginning itself, I stumbled in my introduction, and that was, I think, really something which made a difference. That form which came before the interview, which we needed to tell, that was a really important part of the interview. So I'd advise all of you to please fill that form very by Very summing up carefully. everything Yeah. properly, very carefully. We should do that very carefully. So that was which part and deferred both the interviews. I was really confident in the Rohtak interview and Indore interview. They were basically raining questions in the interview. They were firing shots. Really, they were. Okay. One thing if you say wrong, and then it just continued. ओके, सो ही इज क्लियरली टेलिंग यू कि अगर एक जगह तुम नर्वस हो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो फिर तो बिल्कुल फायरिंग चालू हो जाती है एक के बाद एक. ओके. अर्श, समथिंग विच इज क्रूशियल, यू वर अ ड्रॉप ईयर स्टूडेंट. ओके. एक Yes, sir. स्टूडेंट साइकी थोड़ी सी अलग हो जाती है एक ड्रॉपर की, और स्टूडेंट साइकी जो फ्रेशर की है वो अलग रहती है. आप लोग को टाइम ज्यादा मिलता है, लेकिन ये पता होता है कहीं ना कहीं कि यार ये मेरा हो सकता है कि आखिरी अटेम्प्ट हो. ठीक है. तो Hmm. from that psyche, what are you going to advise to all the kids who are listening to you right now? As I mentioned in the earlier part of my interview, that there are always these inner questions arising from within, that क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्या same result ना हो जाए. The only way to address these questions is consistency or your preparation. You can address these questions only through preparation. अगर आप properly prepare करते हो, मैंने partial drop भी नहीं लिया था, मैंने complete drop लिया था.
and I'll not advise anyone of you because it depends from person to person. हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ड्रॉपर को बहुत प्रेशर होता है अंदर से ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं एडवाइस यही दूंगा कि सारा चीज अच्छे से फॉलो करो, प्रिपरेशन करो, मॉक्स दो, एनालिसिस करो, जो फैकल्टी मेंबर्स कहते हैं सबको फॉलो करो प्रॉपरली, अटेंड ऑल द क्लासेस, एंड आई थिंक दैट विल बी इनफ, दैट विल डू। Great, Arsh. So Arsh is making some very crucial points that प्रेशर जरूर रहेगा, बट उस प्रेशर को ओवरकम करने का बहुत सिंपल तरीका है, फॉलो योर सीनियर्स एंड मेंटर्स द वे दे आर गाइडिंग यू इन द क्लासरूम्स. ऑल्सो आई विश ईच एंड एवरी वन शुड बी वेयरिंग द जर्सीज ऑफ आई एम, जिस तरीके से अभी अर्श वेयर कर रहे हैं आई एम रोहतक की जर्सी. ही इज सिटिंग इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ आई एम रोहतक. Final question to you, Arsh. Any two tips which you can give right now to the juniors who are listening to, if you have, that जो कि उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं जाते जाते. Okay. First tip I'll like to give that to the all everyone, then try to be as positive as you can. Great. Never think that मेरा नहीं हो सकता है. Especially to the droppers, please don't question yourselves, question your words. Try to be as positive as you can. And the second tip that everyone will be giving you every now, I'll advise you to follow the key, that follow this, that the key to success is consistency. You should be consistent in your approach. You should practice each and every day. Every second counts. Really, it does makes a difference. So positive mindset and consistency are two key takeaways from this particular interview. Thank you, Arsh, for sparing the time. मुझे पता है definitely तुम लोग के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, उसके बीच में आकर ये इंटरव्यू Yes. देना. Thank you from Team SuperGrads. You will remain our family forever. Thank you. Thanks.